Right, yes. The rest of the students, आपका जो preparation हो रहा है. Now remember this, all those things that I have been telling them. लोग को जो मैं correction बताऊंगी, तो बायका उनका जो correction बताऊंगी, वो आप अपने PPT में implement करेंगे. Presentation में या PPT में थोड़ी दिक्कत आ रही है. अगर कोई shortcomings मैं बता रही हूँ, तो आप try करें कि वो shortcomings आपके PPT में आप, ठीक है? Delay हो रहा है, इसका मतलब क्या? That means you have one more day to prepare. You have one more day to prepare. It needs to be much better than theirs, right? So आप prepare करते करेंगे तो you find that यहाँ पर जो भी tips दिए जा रहे हैं कि सारे presentation वो अपने presentation में implement करना है, ठीक है? चौथा मुद्दा है वो आदर्श है। वो करेक्टर है। अगर कनेक्टिंग वायर में दिक्कत है then we can shift the classes. अभी बहुत सारी classes end हो चुकी हैं, we can shift that. अगर connector में problem है, you are going to issue. That's what speaking. क्या? कैसे क्यों आ रहा है? It does not affect that much. थोड़ा सा बस टेढ़ा है इसलिए. Yellow is what? But you like it? Problem Your presentation PPT is not the major important thing. Your presentation is the important thing. चलो. कैसे मैं बोलूँगी मैं? बच्चे उसको देख के नहीं बोलना है, तुमने जो प्रिपेयर किया वो बोलना है. देखो इसके वजह से हुआ है. ओके. चल स्टार्ट. इधर से नहीं दिखा सकते हैं. क्या करना है? अभी अच्छा नहीं दिख रहा है. क्या करो? नहीं शो कर रहा है कलर्स. सारा पीपीटी करा. ओहो. I don't think so that will implement. This time you are
वर्कशॉप चल रहा था तभी ये नहीं आ रहा। Good evening, ma'am and everyone. I am Mahima Kumari, and we are here to present our video game. Our video games is good for you, and I will introduce about introduction, evolution, and best and worst video games. And other part is introduced by my other team member Adarsh Narayan, Suresh Agarwal, and Akash Kumar. First, introduction. Video game is an electronic games. Video game is electronic device. It is interaction of people on electronic mediums. Video games are mostly emerging industries in the world. Video games are everywhere. Video games actually made in science lab. Video games are used in science military. People like you and scientists. In video games industries, as gaming industries emerging with video games. Video games mostly focus on eliminate stress, reduce mental capacity. It helps in increasing improvement. Video games has benefit about physical and casual activities. Most companies has increased two factors and features in video games. So video games is most important. And the history of video games. The history of video games goes as far in 1914. In 1958, first video games is introduced by Pony in Bookpalm Open House Laboratory in USA. In 1916 and 1917, video games has introduced, but that time video game has not preferred by all people. But after that, computers and smartphones are introduced in world, so video games are much liked by all people. And there are nine generation of video games. Ninth generation of video games is ongoing on process currently. And the ninth generation of video game name is Microsoft Series Xbox and Family S console and Sony PlayStation 5. And the next topic is the best and worst video game. Best video game is Minecraft, Call of Duty, Grand Theft Auto 5, and the worst video game is Earthbound, Grim Fandango, Blue Whale, and PUBG. Thank you. And I would like to invite my other team member, Adarsh Narayan, for further details. Thank you, Mahima, for giving me this opportunity. As we all know, each person each person. जब आप presentation दे रहे हैं तो ना स्क्रीन के ऊपर आपने साइड में रहिए या तो इस तरफ या उस तरफ जिस तरफ आप रह सकते हैं वहां पर विजिबल होनी चाहिए ठीक है। thank you, Mahima, for giving me this opportunity. As we all know, everything has two aspects, a positive and a negative. And today I am going to deliver the positive aspect of video games. Video game improves our multitasking abilities, as video games requires many functions to play, so that it gives us a multitasking ability. Video games also improves our vision, as more and more video games are developing and more and more video games are developing and creating a very new technology and requires so many skills and visions to play, that which increase our vision and thinking abilities. Video games keeps us socially active. It means video games connect with us
connect with people and make friends and play together. It keeps us more socially active in the whole world. Video games enhance our mood. It means video games is the best way to entertain or enhance our mood when it is upset or sad. Video games make career boost. Video games has nowadays video games has many career as we all as video games industry is developing more and more. It is emerging a new opportunity for the video gamers. Video gamers like Mortal, Scout has made their career in this field of video. Video games reduces stress. Video games reduces stress. As in the in today's world, everyone is in stress because of their homeworks, because of their work. This made a human being very stressful. Video games helps in reducing stress, which in the way of entertaining or socially meeting with the peoples. For the next slide, I would like to call Suyas. Thank you, Adarsh, for giving this opportunity. I will be discussing disadvantages of video games. First is addiction. Nowadays, there are many types of addictions in the world, like addiction of drugs, alcohol, weed, and many more. But in recent times, the most type of addiction is coming out is of video games. It is also known as gaming disorder or internet gaming disorder. People who play video games for like 1 hour or 2 hours, it is good. But the people who are playing it for more than 2 hours, it is causing effect on their health. Second is social replacement. Social replacement. People who are indulging themselves in video games for more than 2 hours, they don't have time to spend. They don't have time to spend with their family and friends. By indulging themselves, it's a theory that people usually say that those people who are indulged in video games are not better in socializing. Obesity. People who are indulging themselves in video games are getting more fat than the people who are not playing video games. People who are playing games for more than 2 hours or more are sitting at one place. They are not doing any outdoor sports or any physical activity. That's why they are gaining weight. Violence. There are many multiplayer shooting games like COD, means Call of Duty, PUBG, and many more. These types of games have a system where you can play random matches with random players and you can win that because it is very easy. But after some time, when you play ranked matches in the game, the game gets very competitive. After losing the game constantly losing the game can cause a person's nature change, like he gets aggressive over losing, throws his phone and shouts, and also it affects his social life also. For further details, Thank you, sir. After discussing the history of video games, advantages and disadvantages of video games, now coming back to our question: are playing video games good for you? The answer is yes. Playing because it improves your cognitive skills like perception, attention control, and decision making, and it becomes you the decision maker. And it also improves your brain to think positively, and it also gives you a stress-free life, and it also improves your social life and makes you less antisocial. So these trends tell us about the video games are not bad for society, and it gives a good perception in people. But a lot of people think about video games are not good. It is bad for children. A lot of parents think about so much of violent games as what children are playing, but children are disagreed from that. They think that the realistic feature of video games nowadays is good, and it is not so childish.
playing so much adult games or so violent games, so children disagree them from. So I think from conclusion, I think everybody should definitely play video games to improve your lifestyle and connect with society. Thank you. Expectation. Yes, I just want to ask, video games have changed over the years from the typical game of bouncing ball. Simple. That's simple. Actually, people may A, B, F, F, E, Q, R, Z, वो एरर ठीक रेक्टिफाई कर दीजिएगा। सेकंड ऑफ ऑल, देखो मैंने पहले ही तुम लोगों को बताया था, ठीक है, योर स्लाइड शुड नॉट कंटेन टू मेनी इंफॉर्मेशंस। आपने जो पॉइंट्स बोले दैट वर वैलिड पॉइंट्स, लेकिन उसमें जो लिखा है ना वो आपको बोलना चाहिए, और जो वन लाइनर्स हैं, ठीक है, उसको पॉइंटर्स में करके लिखिए। अब उससे क्या होगा कि आपके जो बैकग्राउंड इमेजेस है ना, उसकी वजह से बहुत सारे वर्ड्स छुप भी गए हैं। एंड सेकंड ऑफ ऑल, इतना सारा डाटा कोई भी ऑडियंस पढ़ती नहीं है, unless and until obviously you are judging the slides. बाकी लोग उतना पढ़ेंगे नहीं। आपने जो फर्स्ट 2 स्लाइड्स में और अभी की कंक्लूडिंग स्लाइड्स में बहुत सारा डाटा डाला, पिछली स्लाइड्स ठीक थी, लेकिन उन सारी स्लाइड्स को आपने, जैसे गेम इन्वेंट कब हुआ, तो उसका एक पॉइंटर में इन्वेंट, द ईयर ऑफ इन्वेंशन, वेयर इट वाज इन्वेंटेड, एक पॉइंट में वो 3-4 पॉइंट बस लिख दीजिए, दैट इज एनफ। और जितना सारा लिखा है उसको एक्सप्लेन करो। इससे होता क्या है कि देखता कम है तो लोग सुनते ज्यादा देखेगा तो वो आपको सुनेंगे नहीं, वो पढ़ने में या तो लग जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, या इनको लगेगा कि जितना लिखा है उससे ज्यादा बोलेगा। ठीक है, कंटेंट कम करिए। ठीक है, जो इमेजेस आपने लगाए हैं ऑलवेज यूज कंट्रास्टिंग कलर, और कंट्रास्ट इतना होना चाहिए कि विजिबिलिटी है, जैसे आपका फॉर यूथ ऑफ किड बहुत ज्यादा विजिबल है, लेकिन गेमिंग वर्ल्ड इज नॉट एज सच कंट्रास्टिंग योर बैकग्राउंड। ठीक है, वो आपके बैकग्राउंड को नहीं, उसमें दिखता है बच्चे, वो मुझे पता है इसमें दिखता है, लेकिन आपका फिर भी वहां पर देखिए आपने रेड कलर यूज किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज कमिंग अप हियर, लेकिन रेड और ब्लू फिर भी कंट्रास्टिंग नहीं है, यू शुड बी यूजिंग येलो यूज करिए, लाइट येलो यूज करिए, लाइट ग्रीन यूज करिए, दैट इज कंट्रास्टिंग। ठीक है, जो उभर के बाहर आए बैकग्राउंड से। ठीक है, जैसे व्हाइट एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है उस तरह का कंट्रास्ट कलर आपका होना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स अभी आपकी हुई थी ना, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर कंट्रास्ट कलर उस तरीके का है ना, तो आपका या तो स्लाइड पूरा अच्छे से और उसमें जो लिखा है वो पूरा अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, ऑलराइट। एंड पर्सनल रिव्यूज, तुम तो पूरा परेशान हो गई यहाँ पर स्क्रीन नहीं दिखने की वजह से, जो चीजें बोल सकती थी ढंग से वो भी नहीं बोल पा रही थी अच्छे से। यस और नो? आधा घंटे तो दिमाग से तुम्हारा इसीलिए निकल गया कि स्क्रीन नहीं दिख रहा अच्छे से। सी ईच एंड एवरी टाइम योर लाइफ, आपको कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, कि आपके हिसाब से नहीं चलता, और अगर आपको ऐसा लगता है कि टेक्निकल एरर सिर्फ यहाँ कॉमन कॉलेजेस में होता है, मैं बता दूं आपको कि जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं वहां तक टेक्निकल एरर होता है। तो जब इतने बड़े शो में टेक्निकल एरर हो रहा है और वो लोग नहीं अपने परफॉर्मेंस में खराबी लाते हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, दिमाग में बस इतना रख लो, जो भी प्रॉब्लम होगा आपका प्रेजेंटेशन ज्यादा मैटर करता है। कंटेंट पीछे का दिखाने के लिए इन लोग के लिए जरूरी है, आपके लिए जरूरी है जिस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तुम तीनों की आवाज क्यों नहीं निकलती है यहाँ पर आकर? वहां बैठे बैठे इतना जोर से चिल्लाते हो कि मुझे यहाँ तक क्लियर सुनाई देता है, और यहाँ पर आने के बाद एकदम ऑपोजिट हो जाता है। आवाज नहीं आ रही, सुनाई दे रहा था, सुनाई देने में और समझने में डिफरेंस होता है। ठीक है, इतना आवाज होना चाहिए कि अच्छे से एक एक वर्ड अलग अलग सुनाई दे। ठीक है, अच्छे से बोला करो, तुम लोग से एक्सपेक्टेशन रहता है। ठीक है, इन लोग से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि हाँ चलो आवाज धीमी है, नहीं सुनाई देती। वहां पे बैठ के जो चिल्ला रहा है, जिसकी आवाज यहाँ तक एकदम ऐसे आ रही है जैसे कान के पीछे बोल रहा है, वो यहाँ आके नहीं बोल रहा, वो चीज नहीं करो। ठीक है, ट्राई टू गेट योर वॉइस लाउडर, ट्राई टू गेट सम कॉन्फिडेंस, और पहले ही बोला था ना, हाथ पीछे नहीं रखना है। अभी नहीं, हाथ किसी का नहीं था, सबका हाथ पीछे था। नहीं था, हाथ पीछे रखने से आप डिफेंसिव पोज में रहते हैं, एंड यू शुड नॉट बी इन अ डिफेंसिव पोज व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ समवन।
ठीक है, हाथ जितना ओपन रहेगा उतना ज्यादा अच्छा। Try facing the palm to your audience. ठीक है, sit up. A for an effort. फोटो नहीं, फोटो हो गया। अच्छा, डू वन थिंग, इसका जो फर्स्ट पेज है ना उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। फ्रंट पेज का पीपीटी का आपका इमेज भेज दीजिए। यस, नेक्स्ट चलिए। Good evening, ma'am, and good evening to all of you. I'm Sachin, and I am here present to topic about why is reading important. First of all, reading teaches us new words and perspectives. It helps heighten language and sharpen sentences structure. It gives us better command over the language, any type of language, Hindi, English, Bengali, other language which we read. Next point. Some benefits of reading. First benefit is it improves our creative and imagination. If we reading continuously, our mind are expanded to think anything and about anything, to create new things and innovation. A creative mind needs some reading in always less than 30 minutes or something. Next, it helps you learn a new thing. If we study, if we reading continuously, we always know a new things about new things. It's like we always not need a same book or same topics. Next point is it increase your vocabulary. If we reading too much, our vocabulary size of words are large and greater than backside. Next point is it improve memories. All the things are not memorized our mind. Some things, if we read continuously, some things are memorized as like we see the first two words or first two letters, we memorize the word, which is the word of that starting letters. Next, it improves your writing skill. If you read, we want to write anything about it. It reduces stress. Reading is the best way to go to sleep. It reduces stress and feel good to sleep. Thank you. And I would like to invite my team member Manisha. Good afternoon, ma'am, to all of you. This is Manisha. Firstly, I would like to thank to ma'am and my team member for giving me this wonderful opportunity to present myself in front of all of you.
Today, I'm going to present difficulties in the not reading. First, slow reading speed. If we not reading on daily basis, our reading speed will be slow. Second, omission of word while reading. In this case, omission of word. Second, omission of word while reading. Third, reversal of word or sentence while reading. Fourth, limited sight word and vocabulary. Thank you and for the reading. Thank you, Melissa. My name is Manish. Today, I am delivered to the conclusion of this topic. So now I'm conclusion. Reading is the one of the most important and interesting and best quality or qualitative habits for a person. So books are known to be a best friend for a reason. So it is very important to develop our reading style, reading habit. So if we develop our reading habit of reading, so we not got in we not got in study teaching all of this. So we at least daily basis we need to read book at least 30 minutes per day. So thank you for this presentation and sorry. All right. फ्रंट पेज लगा दूंगा प्रेजेंटेशन का फ्रंट पेज लगा दीजिए एंड एक साइड खड़े होते हैं Yes, पहले इन लोगों को डिग्री दे देते हैं फिर आप लोग का करवा लेंगे ठीक है All right, first of all पहली जो आपको दिक्कत आ रही है वो मैं पहले बता दूं मैंने एक पैटर्न नोटिस किया आप लोग कंटेंट जितना जानते हैं वो सारा स्लाइड्स पे लिख देते हो तो जब स्लाइड्स पे लिख ही दिया तो फिर बोलोगे क्या कंटेंट जितना आपको पता है उसका 20% रहना चाहिए आपके स्लाइड्स पर सिर्फ 20% which includes visual aids ठीक है आपका जितना भी कंटेंट है वो 20% रहना चाहिए एंड इफ यू आर इंक्लूडिंग पॉइंट वाइज मान लीजिए आपने एक पॉइंट वाइज कुछ चीजें इंक्लूड की हैं तो सारे पॉइंट मत लिखिए इससे बेटर है कि जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में है उन 4-5 पॉइंट्स के आप इमेजेस बना दीजिए ठीक है बेनिफिट्स ऑफ समथिंग जैसे आपने स्लाइड्स में बनाया था ठीक है वन वर्ड लाइनर एंड विद एन इमेज वो ज्यादा बेटर है ठीक है कंटेंट जितना कम रहे उतना ज्यादा आपको बोलने में बेहतर रहेगा ठीक है आपके पास बोलने के लिए ज्यादा कंटेंट रहेगा इफ यू आर इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स इन द स्लाइड्स आप लोग देख लेंगे सारी चीजें या फिर पढ़ लेंगे यहाँ पर सारी चीजें nobody is going to actually listen to you while you are speaking और कॉन्फिडेंस लेवल का क्या किया जाए तुम लोग का देखो इंट्रोडक्शन जो आपका होता है इंट्रोडक्शन हर एक चीज का होता है बहुत लंबा और कंक्लूजन भी होता है बहुत लंबा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको लिखना नहीं है ना यहाँ पर बस वो चीज रिमेम्बर करिए कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो आपका लंबा जाएगा आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आप बोलिए आराम से 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट जितना लेना चाहते हैं इंट्रोडक्शन के लिए ले लीजिए लेकिन स्लाइड पे लिखना नहीं
स्लाइड पे इमेज इंक्लूड करो, स्लाइड पे 1 लाइन 2 लाइन 3 पॉइंट, मैक्सिमम 3 से 4 पॉइंट्स रहने चाहिए। उससे ज्यादा पॉइंट्स आप इंक्लूड करोगे, एक तो फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, पढ़ने में बहुत दूर तक अगर ऑडियंस होगी तो नहीं पढ़ने में बनेगा। इट इज बेटर टू इंक्लूड पॉइंट वाइज विद बोल्ड लेटर्स एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि आपको सुन तो सभी को ही सकता है, भले स्लाइड्स हो सकता है कि मान लो यहाँ पर 100 लोग हो, 100 लोगों को ये इतनी स्लाइड्स विजिबल नहीं रहती हैं, ठीक है, नहीं उनको दिखाई देता इतना सारा, लेकिन उनको सुनाई तो देगा ना। तो इट इज बेटर टू स्पीक मोर एंड टू शो लेस। ये सिर्फ इसलिए रहता है ताकि एक आप कह सकते हैं पार्शियल कंसंट्रेशन बना रहे, ठीक है, ऑडियंस के सामने कंसंट्रेशन बना रहे, एंड प्लस प्रेजेंटेशंस जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपका जो जॉब में प्रेजेंटेशन यूज होता है क्लाइंट्स के लिए या अपने टीममेट्स के लिए या अपने सीनियर को दिखाने के लिए कि आपने क्या काम किया या आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, राइट। तो उसके लिए जैसे मान लो आपको पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट हमें आपकी कंपनी को देना है। नाउ इफ द क्लाइंट इज अ न्यू वन, मतलब पहले कभी आप उनके साथ काम नहीं किए हैं, किसी कंपनी में किसी भी तरह आपसे वो जुड़ा हुआ नहीं है, सो इन दैट सेंस यहाँ पर क्या होगा कि उस केस में उनको इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपकी कंपनी के पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ आपका एक पूरा ब्लू मैप चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए कि हम ये प्रोजेक्ट जो है आपको 4 महीनों में ये सारी चीजों के साथ करके देंगे, ठीक है, और प्रॉफिटेबल इतना रहेगा हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से। अगर एक क्लाइंट जो है वो पुराना क्लाइंट है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपके साथ 5 साल से 6 साल से जुड़ा हुआ है, तो उनके पास आपका एक्सपीरियंस है, आपकी टीम का एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो फिर भी देनी है, तो किस चीज का दोगे? सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट कितना दिन में कंप्लीट होगा, क्या क्या चीजें की जरूरत होगी, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कितना आपका मॉनेटरी रिसोर्स लगेगा, कितना आपका प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है, वो सारी चीजें आप उसमें एक्सप्लेन करोगे, राइट। तो उन सब चीजों के लिए ना पाई चार्ट्स यूज होते हैं, ठीक है। कंपनी एक्सपीरियंस के लिए ऐसा नहीं कि कंपनी का पूरा एक्सपीरियंस डाल दिया जाता है, 20 साल की अगर कंपनी है, 30 साल की कंपनी है, उतना नहीं डाला जाता है, रिलेटेबल डाला जाता है, ठीक है। जैसे कोई अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो उनके पास कोई पुल बनवाने आ रहा है तो वो पूरा अपना 20 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं डालेंगे, जितने पुल उन्होंने बनाए उनमें से 3-4 जो एक्चुअली सक्सेसफुल हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, उनको डालेंगे। That means your best product would be on display and rest of them का नाम ले लो, मान लो तुमने 15 पुल बनवाए तो तुम 3-4 को दिखा दो यहाँ पर विद द इमेज एंड उसके बाद फिर 15 का लिस्ट बता दो, यहाँ पर बोलोगे तो सुनेंगे, उसके बाद 5-6 देखेंगे, दैट इज इनफ फॉर देम, ठीक है। इस तरह का प्रेजेंटेशन यूज होता है एंड इसी तरह का प्रेजेंटेशन ही रहना चाहिए। और एक कॉन्फिडेंस लेवल का अगेन आई एम टेलिंग, क्या करूं मैं आप लोगों को बता, कोई जड़ी बूटी तो नहीं है इसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो क्या किया जाए? आप यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जा रही है वो तो सही है, लेकिन प्रैक्टिस में यहाँ आते ही ऐसा कॉन्फिडेंस मतलब पूरा खाई में गिर जाता है आपका कॉन्फिडेंस, उसका क्या किया जाए? थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखो बच्चे, ठीक है। सबसे गलती होती है, कोई आपको मार नहीं रहा है गलती करने के लिए, अब तो कोई नहीं मार सकता है मम्मी पापा के अलावा, लेकिन उस चीज को यहाँ पर दिखाई नहीं ना, दैट यू आर फियरफुल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। आपका इतना कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, दैट इज प्रैक्टिकली विजिबल थिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप कितने यहाँ पर नर्वस हैं, कितना लो कॉन्फिडेंस है, कितना गलती करने से डर रहे हो। क्या हो जाएगा बच्चे, जो प्रिपेयर करके आए हो वही बोलना है, छूट जाएगा तो छूट जाएगा, क्या हो गया? कंटेंट ऐसा तो नहीं है कि आपको 30 मिनट का या 50 मिनट का आपको कंटेंट डिलीवर करना है, यू ओनली हैव टू डिलीवर मिनिमम ऑफ 1 to 2 मिनट, 2 से 3 मिनट मिनिमम मैक्सिमम, उससे ज्यादा का कंटेंट पर इंडिविजुअल कैंडिडेट नहीं है, तो उतने के लिए इतना क्यों डरते हो? नहीं, कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ग्रो करे। स्पीचेस मैंने करवाया, उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होते हैं, आप स्पीच यहाँ पर डिलीवर नहीं करते हो, अब रेगुलर पीरियड में आप स्पीच डिलीवर कर नहीं रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, बिकॉज दिस इज एन अनफेमिलियर टेरिटरी फॉर यू। ये फेमिलियर तभी होगी ना जब आप रेगुलर बेसिस पे आएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग आई हैव नोटिस्ड ऑन बोथ द टीम्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नोटेबल हैं। आकाश हर
नाम के आगे, हर चीज के आगे एसएस नहीं लगता है। गेम्स इज एंड ऑल, बॉयज इज, गर्ल्स इज, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। एंड who was that girl in the second thing? क्या नाम है बच्चे? महिमा, मनीषा, यस। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इतना डरने की क्या जरूरत है? नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना याद है उतना बोलो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, ये हिंदी टू इंग्लिश स्विच मत किया करो सचिन, हिंदी इंग्लिश स्विच मत किया करो, ठीक है। वो चीजें ध्यान रखनी है, ना स्विच करना है लैंग्वेज। और अगर भूल रहे हो तो 1 मिनट रुककर, ठीक है। देखो सबसे बड़ा एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। देखो इमेजेस डालने के लिए क्यों बोले जाते हैं? अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना, आप 2 सेकंड के लिए बोल दो ऑडियंस को, लुक एट द इमेजेस। उतने देर में वो इमेज देख रहे हैं तो याद कर लो क्या बोलना था, समझे? इसीलिए इमेजेस इंक्लूड किए जाते हैं कि अगर आप भूल गए ना, 2 मिनट के लिए बस बोल दो ऑडियंस को, हाँ तुम देखो। जैसे टीचर्स कभी कभार क्या करते हैं, तुम लोग आते आते क्लास में तुम लोग हल्ला कर रहे होते हो तो क्या करते हैं कि देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया थे, आप क्वेश्चन पूछेंगे, उतना देर में वो सेटअप कर लेते हैं, यस और नो। सो व्हाइल you need to keep your audience busy, while you are taking the time to think what to speak, try to have some distraction on the screen so that वो खुद अगर कर दिया आपने, जैसे मान लीजिए आपका जो ऑनलाइन गेमिंग वाला टॉपिक था, उसमें आप 4-5 गेम के लोगोस डाल देते, जैसे आपने डाले भी थे, और आपको अगर नहीं याद आ रहा था तो बोल रहे देखिए ये सारे वीडियो गेम्स तो आपने देखी होंगी, दीज आर वेरी पॉपुलर, ये बोलते बोलते दिमाग में सोचो आगे क्या था, आगे क्या था, ठीक है। आपने जो बेनिफिट्स आप बता रहे थे या जो भी चीजें बता रहे थे उससे ज्यादा इमेजेस दिखा देते कि वेयर ऑल थिंग्स योर रीडिंग कैन बी हेल्पफुल। राइटिंग के लिए किताब की इमेज दिखा देते, राइटिंग में हेल्प करता है, प्रेजेंटेशन में, वोकैबुलरी में हेल्प करता है, तो एक स्पीकिंग वाला ये स्पीच डिलीवर करने वाला इमेज दिखा देते, ठीक है। ट्राई टू फाइंड कंटेंट विद अ विजुअल एड्स, उससे क्या होगा आपकी ऑडियंस इंगेज रहती है बहुत ज्यादा। 2 सेकंड के लिए अगर आप ब्रेक लेते हैं ना तो उनका ध्यान तुरंत से आप पे नहीं जाएगा कि हाँ ये बोल नहीं रहा है, वो चुप हो गया, वो इमेजेस देखने में बिजी हो जाएंगे। एंड इन द मीनवाइल यू कैन थिंक ऑफ समथिंग टू कंटिन्यू, क्योंकि कंटेंट तो आपके पास है ना, आपको पता है कि कंटिन्यू किस तरीके से करना है, ठीक है। उनको नहीं पता कि क्या गलती हो रही है। यू नीड टू कीप गोइंग ऑन, इफ यू स्टॉप इन द मिडल ऑफ समथिंग दैट मींस यू विल give it an idea to your audience that you have forgotten something or you are nervous. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए. And rest of the teams also keep in mind all the things that I have said today. आज जो भी टिप्स दिए हैं आपको वो सारी चीजें बार बार नहीं बताना चाहिए. यहाँ पर अगर कोई भी एरर होता है because of this thing, it should not interrupt your performance because that is much more important than the visual aids. ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल, आपने जो भी कंटेंट लिखा है उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे से जो भी प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश करिए खुद से। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, आपका जो पीपीटी है उसमें पॉइंट्स कम रहने चाहिए ताकि आपको बोलने के लिए पॉइंट्स ज्यादा रहें। फोर्थ थिंग, बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट कमिंग अप हियर, ठीक है। कोई आपको काट के खाने वाला नहीं है कि इधर आप एक तरह काटने लगते हो सब। Be a little more confident here, ठीक है। And yes, मनीष, बच्चे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको भी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंट के लिए, ठीक है। बाकी बच्चे तो बोल भी रहे थे, मनीष और मनीषा दोनों इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे आप लोग, ठीक है। You need to work on that. Yes, CIMAGE group, please come. I will take the photo. फ्रंट पेज कनेक्ट कर दीजिए, जो आपका कलरफुल नहीं आ रहा था मे बी अभी आ जाए।